Guess questions. But how you are guessing, that is also important. Ki guessing is See, I am thinking of making a video on this. वीडियो जिनको आना है वो आ भी सकते हैं along with the India yearbook. So we'll mark the India yearbook जो पढ़ना है बस only इसमें से पूरा का पूरा जो आज नहीं किसी एक दिन अगर आना है या फिर I will making a video आपको मेल आ जाएगा जिनको आना है they can come in the class and do this because सारे chapters नहीं करने होते हैं. You have to do some selected. एक इसलिए मैं ये बनाना चाहता हूँ because 2014 में 17 questions were exclusively from India yearbook. जिस साल इलेक्शन था 14. Because you have to understand very simple thing कि थोड़ा इको और लैपटॉप. You have to understand there has been no new scheme which has been launched by the government. हाँ कल वाली PPT दिखानी है. So the same things are there but ये एक extra revision है बाकी कुछ नहीं है. And hardly it will take 1.5 hours to mark the entire yearbook and for you to study it will take 6-7 hours. If अगर पढ़ना चाहते हो तो अगर नहीं पढ़ना चाहते तो it is not something different because everything is there in the notes. For example, health and family welfare के कुछ schemes में कुछ अलग नहीं है इसमें. नेशनल हेल्थ पॉलिसी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है. सेकंड है आयुष्मान भारत वो भी पढ़ा है. तीसरा है मिशन इंद्रधनुष वो भी पढ़ा है. चौथा है द पोषण अभियान वो भी पढ़ा है. फिफ्थ है माँ प्रोग्राम वो भी पढ़ा है. दैट इज प्रेजेंट इन आवर हैंड नोट्स. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वो भी पढ़ा है. जननी शिशु सुरक्षा अभियान वो भी पढ़ा है. कायाकल्प एक ये अलग प्रोग्राम है अगर वो पढ़ा होगा तो. राष्ट्रीय आरोग्य निधि रान दैट इज अ सेटअप इन 1997 एंड इसमें देयर आर ऑल द प्रोग्राम. सो इट विल जस्ट यू शुड हैव अ जस्ट आइडिया क्योंकि ये पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चंस आई डोंट नो बट इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेशन दिस ऑफ द. सो इसमें इन पूरे इस चैप्टर में सिर्फ ये 5-6 प्रोग्राम्स पढ़ने हैं. देयर इज यू शुड नो हाउ टू स्टडी दिस. हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल स्मार्ट सिटीज मिशन में क्या क्या स्ट्रैटेजीज है. अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन दैट इज अमृत मिशन. सो दिस विल हेल्प यू इन रिविजन. अब इसमें से ये पूरे चैप्टर में से ये पूरे इसमें से यू शुड जस्ट रीड दिस 3 lines एंड दिस 4 lines. Nothing else. Nothing is new. But अगर खुद पढ़ोगे तो you will be wasting the time in reading all these things. So we will cover environment today itself. Whatever is there in the India yearbook, we will cover it today itself. What is the difference between mic and sites? Mic is for elephants. Mic is for elephants and sites is an non-governmental organization working for conservation of environment या intergovernmental organization. It is an intergovernmental organization working for the environment. It is a treaty of United Nations. In sites can I say there are 3 categories: appendix 1, appendix 2, appendix 3. Appendix 1 are on the verge of extinction, appendix 2 threatened, fine, and appendix 3 are एक किसी country में. So किसमें trade is stopped, किसमें trade is not allowed?
किसी में भी ट्रेड इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है, सब में ट्रेड अलाउड है, द ओनली थिंग इज ट्रेड इज रेगुलेटेड, इसलिए हमने लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है द एनिमल्स विच आर लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 उसमें ट्रेड इज नॉट अलाउड, ट्रेड इज अलाउड बाय ईच एंड एवरीथिंग, द ओनली डिफरेंस इज कि ट्रेड इज कितना ज्यादा रेगुलेटेड, इफ इट इज इन द अपेंडिक्स 1 इट विल बी मोर रेगुलेटेड, इफ इट इज इन अपेंडिक्स 2 इट विल बी लेस रेगुलेटेड एंड स्टिल लेस रेगुलेटेड इन द अपेंडिक्स 3. फाइन, दोनों का objective is same, that is both of them objective is so that the trade in the endangered trade does not affect the wildlife. Fine, then we did one, that is what is known as national action plan for increasing the migratory birds. So in this national action plan is the focus is on arresting the decline. Focus is on arresting the decline, yes. Conservation of habitats of the migratory bird, yes. Increasing the population of the migratory birds, yes. Doubling the population of migratory birds, no. Right? Doubling क्यों करना है migratory birds? Right? So it is on arresting the decline in population, increasing the population, protection of their habitats, and also the involvement of the people is there. Yes, there is an इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. ये मेरे इधर रख देना. ये लाइट्स so the goals and objectives. इनको मेल करना है. Goals and objectives is habitat conservation, sustainable management. किसी भी में आता है तो obviously the answer will be yes. कौन सा treaty कहेगा कि I am not going to do sustainable management? Species conservation, habitat conservation, capacity development of the local people, communication and outreach so that you don't kill the migratory birds, research and knowledge development, and international cooperation. Fine. Where is the phenomenon of chirbatti observed? Bunny grasslands. What is this chirbatti? Ghost lights. Chirbatti is the ghost lights that is observed in the bunny grasslands. इंटरनेट आ रहा है यहाँ? हाँ. Fine with this? Any problem in this program? Pangolins. How many types of pangolins are found in India? 2. Chinese pangolin is found only in China? No, it is found in Northeast India. Extinct or critically endangered? Extinct. Maybe extinct. ऐसा आएगा. It has not yet been declared, but it is feared to be extinct. And which is critically endangered? Indian pangolin. So, pangolin, though the hunted for its meat across the northeastern states and central India, its demand for the skills in China has made it critically endangered animal in less than a decade. On the World Pangolin Day, February में होता है, possible extinction of the Chinese pangolin and the likelihood of Indian pangolin found elsewhere in India of being wiped out. इसलिए it is critically endangered. अब the next program is, we'll study the program and we'll write the points for prelims. 4 species were added to the recovery program by the Wildlife Board. So which is this program? The National Board for Wildlife added the 4 species, that is Northern River Terrapin. क्या है ये? Freshwater turtle. Clouded leopard. क्या है? Arabian Sea humpback whale. ये नहीं पूछेंगे. Where is the Arabian Sea humpback whale found? Fine. It is in the Arabian Sea only. Red panda. Where? Northeast. To the recovery program for critically endangered species on the recommendations of standing committee. ये काम का नहीं है. So this is a program that is the National Recovery Program for the Endangered Species, and the program is one of the 3 components of the centrally funded scheme, Integrated Development of Wildlife Habitats. ये scheme का नाम है, Integrated Development of Wildlife Habitats. What is this Integrated Development of Wildlife Habitats? It is one of the 3 programs
integrated development of wildlife habitats plus conservation of tiger plus conservation of elephant. So this is the program which is known as integrated development of wildlife habitats, which will be focusing on the tiger conservation 5th September, because this program has been now extended and that is why it is in the news. Kiska? Achha. Fine, so we will study what is this integrated development of wildlife habitats. Started in 2008-9, integrated development of wildlife habitats is providing support to the protected areas. You already know now what are the protected areas. So iska ek component hai providing support to the protected areas. It is national parks, wildlife sanctuaries, conservation reserves, community reserves. But इस program में what is not there? All the protected areas are there except tiger reserves. So this is one key point. Integrated development of wildlife habitats is for the providing support to the protected areas except the tiger reserves. क्यों tiger reserves नहीं? Logical, because tiger conservation is the second component of the program itself. Fine. Second, protection of wildlife outside the protected areas. This is the second component. Inside the protected areas, outside the protected areas, and third is recovery program for saving critically endangered species and the habitats. Jisme now the 4 species have been added, and they are northern river terrapin, clouded leopard, Arabian Sea humpback whale, and red panda. Have you seen northern river terrapin? Is it in the news? Is it critically endangered? Yes. It is found in the rivers of India. You have seen northern river terrapin, though not in real life. मंदिर के बाहर जो कछुआ का मूर्ति बना रहता है, that is northern river terrapin. It is having an importance in Hindu mythology. हर मंदिर के बाहर एक कछुआ बना रहता है. That is what is the northern river terrapin. Tortoise जो बना रहता है, tortoise और turtle जो बना रहता है. Basically, it is a yes. Greenback turtle different है, starred है. This is northern river terrapin, especially if you find in the peninsular India में, this will be there. So far 17 species have been identified under the program. ये सब नहीं करना है. You have to remember this 4. You have to remember what are the major components: providing support to the protected areas, except tiger reserve, protection of wildlife outside the protected areas, and the recovery program for saving critically endangered species. 17 species have been identified. मतलब ये 17 species का location you should know, and that is your biodiversity के important species. You know snow leopard? कितने states? 5 states of Himalayas. Great Indian bustard? Rajasthan only, या Rajasthan and semi-arid regions of India. That is Maharashtra, Karnataka also. Dolphin, 2 types of dolphin in India. Riverine dolphin, कौन सी? Indus dolphin and Gangetic dolphin. Indus dolphin in which state of India? Punjab. In which river? Bias. Indus dolphin in Bias. Hangul, Kashmir stag. Nilgiri tahar, Nilgiri wild goat, associated with the Shola forest of the Nilgiris, that is the Western Ghats. So कौन से states? Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Marine turtles, marine turtles सारे हैं. So India में 3 important marine turtles. One is olive ridley, where largest nesting ground is Orissa, but it is found all along the eastern and western coast of India, but largest nesting ground is Orissa. Is this the smallest turtle in the world? Yes. Which is the largest turtle in the world? Leatherback turtle is the largest turtle in the world. Where it is found? So you can note down, it is found in Andaman and Nicobar Islands and Gulf of Manda. It is the largest turtle in the world, found in Andaman Nicobar and the Gulf of Mannar region.
You can get an idea, largest turtle in the world. Now this has been hunted, you can see. उसका सर काटा हुआ है. So, but this is the largest turtle in the world, leatherback turtle. Fine. An olive ridley turtle, the smallest turtle in the world. What? This is the smallest turtle in the world. So this is all along the eastern and western coast of India, but leatherback turtle only in the Gulf of Mannar and the Andaman and Nicobar Islands. Olive ridley turtle. And that is why it is critically endangered. So, you have just seen the photo of leatherback turtle and you have seen the photo of olive ridley turtle. इसके ऊपर we are standing. Yes, yes. Leatherback is endangered. किसमें? मैंने कहा था फालतू में काम बढ़ाने के लिए endangered किया है. वैसे सबसे ज़्यादा है. And there is another turtle again in the Gulf of Mannar region, and that is the कुछ देख के आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा. So it is more like this. This is the greenback turtle. It is the again in the Andaman and Nicobar Islands. Sorry, greenback turtle again in the Andaman Nicobar Islands and the Gulf of Mannar, or it is known as green sea turtle. Green sea turtle. And the freshwater turtle in India, the northern river terrapin. क्यों famous है? This is how mother takes care of children. Mother, bigger child and the smaller child. So this is what is the northern river terrapin. So and one last photo before I end, before I go back. This is what is Cheerbatti. Cheerbatti ghost lights. Cheerbatti ghost lights in the Gulf of Kutch region. Or you will now understand Cheerbatti in the, this is how the light will travel. No phenomena, इसीलिए website का नाम भी देखना. Haunted places in India. Fine. This is, ये moon है. This is what is the Cheerbatti. Ghost lights. Fine. So coming back to this thing. So whenever you are doing this PPT, ask yourself whether you know the surrounding knowledge or not. Dugongs all over India? No, it is only in Gulf of Mannar, not East Coast. Gulf of Mannar, Gulf of Kutch and Andaman and Nicobar Islands. Edible nest swiftlet, critically endangered hai? Yes, this is all for critically endangered. So ये एक छोटा bird है. Why it is critically endangered? नाम से ही it is edible, but कोई काम का नहीं है इतना. Asian wild buffalo, where it is? Entire India या mostly in Northeast India? Asian wild buffalo, Northeast India, Assam. Nicobar megapod, the bird that builds the nest on the ground. मणिपुर ब्रो एंटेलियर डियर मतलब सांगाई. Vultures डाइक्लोफिनैक. Malabar civet, a cat like animal that is found only in the
The Nilgiris. Civet are वैसे civet are critically endangered because civets generally are used for coffee. Indonesian civet, for example. Marketing gimmick है. World's सबसे महंगी coffee is one that is coffee beans are eaten by civet and उसके shit में से जो coffee beans है उसको निकाला जाता है and it is sold as the world's most tasty and coffee costliest coffee. So that is what is known as the famous Indonesian coffee. कुछ नहीं, marketing gimmick है, just because civet will eat the coffee, civets, and they will give out the coffee beans because they cannot digest. Indian rhino, one horn, two horn, one horn. So Indian rhino, tell me the national parks, yes or no? Kaziranga, Manas, Pobitara, where? Orang, where is Orang? Assam, अपर आसाम. ओरांग पता है आसाम में? बक्सा, do we have rhinos in Baksa? Yes. So we have Baksa में भी rhinos. जल्दाफारा, where it is? West Bengal. ये सारे तराई रीजन्स के नेशनल पार्क्स है. दिस टू आर इन वेस्ट बंगाल, दिस थ्री आर इन द आसाम एंड ऑल आर फेमस फॉर इंडियन वन हॉर्न्ड राइन. एशियाटिक लायन, विच रीजन? गिर रीजन ऑफ गुजरात. सो आस्क योर सेल्फ, गिर, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पता है गिर का? यस, कि वेदर इट इज वॉल्केनिक और volcanic in origin. Saurashtra region pura volcanic origin. And then ask yourself, why is there anything in current? Yes. So the Asiatic lions, Supreme Court ने अभी order किया that yes, they have to be compulsory shifted to wildlife sanctuary and lion safari at Nahargarh Wildlife Sanctuary in Rajasthan. Is Nahargarh वैसे भी famous? किसके लिए? Haunted fort नाहरगढ़ का. Has anyone gone to the Nahargarh fort during the daytime, night time? Daytime. So swam deer, बारासिंगा, जर्डन्स क्राउजर. एक ये रह गया था मेरा बताना. दिस इज अ स्मॉल बर्ड दैट इज एसोसिएटेड विथ wetlands of Andhra Pradesh, especially Kolliru Lake. Jerdon's Krauser is a small bird that is associated with the wetlands of Andhra Pradesh. हैंग हो गया ये. So this is one program which obviously करके जाना है because you can see the date is very nearby. Fine. कौन? National Board for Wildlife. They won't ask you the National Board for Wildlife, but these are again ये टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन था आपने. What are the components providing support to the protected areas, outside the protected areas, as well as recovery program for the critically endangered species. Fine with this?
रिस्टार्ट करना पड़ेगा. फाइन. सो आई विल गिव यू सम ऑफ द पॉइंटर्स, क्योंकि ये जो न्यूज आइटम है दिस इज टू बिग. सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. मेरा आईपैड लेके आने बोलना उसको. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स. 3 components. 1, conservation of tiger. 3 components. 1, tiger conservation. Second, elephant conservation. Project Mike या हाथी मेरे साथी will be an part of this. And third, recovery program for critically endangered species. Recovery program for critically endangered species. नेक्स्ट, किस किस को ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना. सो ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ और कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क इंक्लूडिंग टाइगर रिजर्व्स या एक्सक्लूडिंग टाइगर रिजर्व्स. एक्सक्लूडिंग टाइगर रिजर्व्स. सेकेंड, conservation of areas outside the protected areas network. Third is recovery program. Third is recovery program. Is the recovery program. फोर्थ होगा इसमें इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल. इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल. ये सब प्रोटेक्ट करके मिलेगा क्या? गवर्नमेंट का फोकस इज, दिस इज अ बिग प्रोग्राम. गवर्नमेंट का फोकस इज टू प्रोटेक्ट दिस एरियाज सो दैट देयर इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंक्रीज इन द population of the wildlife so that tourism will increase, and because the tourism will increase there will be one, less human animal conflict, and secondly there will be more livelihood. So the next objective is lessening the human animal conflict, lessening the human animal conflict. And the next objective will be to promote tourism, and thus increase the income of the people by ecotourism. Increase the income of the people by ecotourism. अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है कि इज दिस प्रोग्राम इज फॉर ऑल इंडिया लेवल या ओनली एट द स्टेट, सम ऑफ द स्पेसिफिक स्टेट्स. सी, इट विल बी ऑल इंडिया लेवल फॉर द रिकवरी प्रोग्राम बिकॉज दिस बर्ड्स विल बी फाउंड ऑल ओवर इंडिया. 17 एनिमल्स है अलग अलग प्लेसेस इन इंडिया, बट इट विल बी ओनली फॉर 13 स्टेट्स or 18 states or 27 states, because tigers are found only in these states and the elephants are found only in this state. So we will write what is the, once after looking from here, लैपटॉप भी थक गया, कब क्वेश्चन खत्म होगा पता नहीं.
ये करने की ज़रूरत नहीं, आई हैव जस्ट गिवन यू व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो a total of 18 tiger range states, मतलब in India tiger is found in how many states? 18. In the countries, कितने countries में? 13. Distributed in the 5 landscapes, 5 geographic biogeographic realms of the country would be benefited under the Project Tiger scheme. Similarly for the other 2 schemes, 3 schemes की हमने, elephant conservation, recovery. The coverage is entire country in the case of development of wildlife habitats, and 23 elephant range states for the Project Elephant. So 23 states में elephant. Besides immense environmental benefits and effective implementation of tiger conservation, in and around the tiger reserves, etc., plus elephant conservation, the scheme would result in overall strengthening of the and consolidation of tiger, elephant and wildlife. कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. The scheme would address human-animal conflict effectively. We have written this. Fine. The scheme would generate employment opportunities. We have written this. Fine. The schemes would result into resource generation through tourist activities. It is obvious. That is, so this is the scheme. Getting it? कौन सी scheme है ये? A slightly different scheme है. So this is integrated development of wildlife habitats. उसमें एक part है critically recovery program for critically endangered species जो news में है directly. Indirectly ये schemes का दो और component है, Project Tiger, Project Elephant, which has been continued. Fine. Any doubt in this? Can I go to the next slide? And the third important scheme is National Wildlife Action Plan for the year 2017 to year 2031. So 3 important schemes: migratory birds, for integrated development of wildlife habitats, and lastly is the National Wildlife Action Plan 2017 to 2031. You have to focus only on the areas. So India has unveiled the third wildlife action plan. Fine. Comes after the first plan in 83, कोई करने की ज़रूरत नहीं. Second plan from 2002 to 2016, and this is the third wildlife action plan. But this plan is unique. Q, because for the first time India has recognized the concerns relating to the climate change impact on the wildlife. Stressed on integrating actions that need to be taken for its mitigation and adaptation in the wildlife management and planning. Kuch mat likho, everything has been given properly in the next slide. The plan was unveiled by Environment Minister Dr. Harshvardhan in the inaugural day of Global Wildlife Program Conference on Monday. कहाँ पे? New Delhi. The Global Wildlife Conference is an initiative of World Bank. 2 prelims के fact. Who Global Wildlife Conference किसका initiative है? World Bank का. And secondly, what is this National Wildlife Action Plan? So what is the first thing here? The first thing is climate change का impact on the wildlife has been added. Now second thing, you have to see, you have to approach the prelims with some generalizations. This is the NDA government. NDA का government का focus will be on digitalization. Fine. Private sector. So you can see what are the major impacts of the National Wildlife Action Plan. Climate change is one topic. It is the first wildlife action plan to recognize the concerns related to the climate change. Fine. ये सब मसाला है, इसकी जरूरत नहीं प्रीलिम्स के लिए. Second approach. अब कैसे approach है? This government, you have seen even in the wetlands, is giving more power to the states. Unlike the planning commission का era where everything was decided by the center. So यहाँ पे states, हर states का जंगल अलग, हर जंगल के लिए conservation effort is different, and therefore rather than centralized approach, we are going to do landscape based approach. So it adopts the landscape approach in the conservation of wildlife. What is the landscape का demand? शोला के लिए अलग, Western Ghats के लिए अलग, सतपुरास के लिए अलग. It is based on the landscape. Fine. It addresses human-animal conflict concerns. It talks about people support. Obvious hai, any new government program in this era of good governance will be talking about the people support. And since this is NDA government, participation of private sector. It underlines the increasing role of private sector in the wildlife conservation.
This government does not believe too much in the government sector. It wants everything, right from Ayushman Bharat till this, everything has, even in the wetlands there is a role of private sector. यही अगर कांग्रेस होता तो यहाँ पे लिखते हम कि the linking of मनरेगा with wildlife conservation, ऐसे ही कुछ लिखते. So that is the understanding. This is how the government का policies is. इसको कांग्रेस मनरेगा के साथ लिंक करता है या इंदिरा आवास योजना के साथ, या और ये प्रोग्राम का नाम होता राजीव गांधी रिकवरी प्रोग्राम फॉर द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, फाइन, या समथिंग लाइक दिस. सो दिस आर द की वर्ड्स व्हिच यू शुड आइडेंटिफाई. सो 5 थिंग है: क्लाइमेट चेंज, अप्रोच, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, पीपल सपोर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन. फर्स्ट टाइम लैंडस्केप अप्रोच, फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज, राइट? गॉट इट? सो भूलोगे नहीं, कब ये पढ़ोगे नोट्स में सब कुछ रिवीजन के लिए होना चाहिए. यू शुड जस्ट नो. थर्ड एक्शन प्लान टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज. फॉर द फर्स्ट टाइम इट टॉक्स अबाउट लैंडस्केप अप्रोच. It talks about the human animal conflict. It talks about people's participation. And it talks about role of private sector. This is our National Wildlife Action Plan. So the private sector is going to help through its corporate social responsibility funds. Same program है for monuments, Monument Mitra. Fine, the same program is there. Adopt a heritage, उसमें भी role of a private sector is there. So theme सब गवर्नमेंट की इट इज मोर और लेस सेम. अडॉप्ट अ हेरिटेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज लॉन्च कि प्राइवेट सेक्टर विल अडॉप्ट एनी नेशनल हेरिटेज साइट एंड इट विल डेवलप अ टूरिस्ट फैसिलिटी. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेवलप ब्रिंगिंग द प्राइवेट सेक्टर, उनके पास इतना फंड्स है, सो यूज इट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. फाइन, this we have already done. There is no change here in this things. This is a small bird which is known as Jordahn's Krauser. And why it is important? We have a postal stamp dedicated to the Jordahn's Krauser. Fine. And where it is found in India? It is generally found in India in Andhra Pradesh. Fine. Range is very small. Therefore, it is important. Can I go to the next thing? On Saturday when you will come for this, I will give you the last handout. वैसे उस handout की ज़रूरत ना पड़े, कुछ नहीं, अपने notes ही है, but tabular format में 5 pages में. Our entire notes for revision, nothing else. Environment के notes, not geography के. So
सो व्हाट इज CBD? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. उसमें दो इंपॉर्टेंट है, वन इज कार्टेजेना, दो इट वॉज साइंड मच अर्लियर, एंड दूसरा इज नागोया. बट कैन आई से the Convention on Biodiversity is an outcome of UNFCCC? Fine. So it is an outcome of Rio Earth Summit. It is an outcome of Rio Earth Summit. It is an outcome of Rio Earth Summit. It has three components. It has three components. First, क्या होगा? Conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. Second, sustainable use of its components. Second, sustainable use of its components. Sustainable use of its components. And third, fair and equitable sharing of benefits. Fair and equitable sharing of benefits. Resulting from the use of modern biotechnology in biodiversity. Use of modern biotechnology in biodiversity. Use of modern biotechnology in biodiversity. Biotechnology, do Santosh sir ka notes very properly. Sir is champion in science and tech. You have seen this. So मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी सर के इसमें से 3-4 चीज़ें ज़रूर करके जाना. सैटेलाइट्स, बायोटेक, फाइन. थर्ड इज द डिफेंस, बट सैटेलाइट्स डिफेंस थोड़ा कम प्रायोरिटी. फर्स्ट इज सैटेलाइट्स. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट. 70% योर साइंस डे का क्वेश्चन विल बी देयर. 3-4 साल में कभी कभी डिफेंस में से एक क्वेश्चन आता है. और लास्ट में है दैट इज द कंप्यूटर. कंप्यूटर में से 10 साल में एक बार आता है, अनलेस इट इज इन द करंट अफेयर्स जो पिछले साल आया था, मालवेयर. बट पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से सी डिफेंस यू कैन डू एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर. इंटरनेशनल दैट इज स्पेस, न्यूक्लियर फिर भी बहुत जगह मिल जाता है. बायोटेक्नोलॉजी इतना आसान नहीं है, जो सर ने बहुत अच्छा करके दिया है आपको. बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्ट आ जाएंगे सर के इसमें से नोट्स. फाइन. So what are the 3 things that are associated with the CBD? CBD के 3 things है. Conservation of biodiversity. कंजर्व करके आप क्या करोगे? You will be sustainably using the components. And third is fair and equitable sharing of the benefits coming out of the biodiversity. Fine. Next is Cartagena Protocol. It is also known as the Biosafety Protocol. Why biosafety? I'll tell you a simple thing. South Seoul में, मतलब साउथ कोरिया में अभी तो वो बैन कर दिया है. Some years back in the South Korea, the concept was कि your pet animal dies, your favorite pet animal dies. I must have told you this in the class. उसकी dead body लेके जाओ, pay $1 lakh US dollars in South Korea, which is a huge amount, and they will create the same pet for you. Same looking, सब कुछ by cloning, and the pet is back to you. So what is that animal? That is real animal या artificial animal? Artificial, created by genetic engineering or by cloning. And suppose such a dog comes in India and it mixes with the gene pool of the Indian dogs. It is not favorable because our Indian dogs are based on certain conditions जो natural है. Anything artificial is not everything artificial is good. Fine. Similarly, India में आज भी genetically modified food is not allowed. India does not allow GM foods. So ये सब कैसे रोकोगे कि these are big companies which जो information छुपा सकती है and they can flood our supermarkets with genetically modified food, especially supermarkets. गांव के दुकानों में तो जाएगा नहीं हो. It will be found in more in Big Apple, in Walmart, etc. And it may cause harm to us.
सी देयर आर टू थिंग्स, हिंदू में दोनों आर्टिकल थे, एक था पॉजिटिव ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, एक था नेगेटिव ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. पॉजिटिव इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज गुड फॉर फूड सिक्योरिटी, नेगेटिव इज न्यूट्रिशनल वैल्यू आई डोंट नो, we don't know nutritional value, and long term effects may cause depression. If you are eating too much of genetically modified food, it may result into depression. You can watch a famous documentary of McDonald burgers. A very healthy person like our Vijay, so रोज जो जिम जाते हैं, a very proper person, हनुमान जी के भक्त, so you can say he he decided for 1 year to eat only McD ka burger, just to tell the people how harmful it is. Within 6 months, that person started developing suicidal tendencies. Nutrition कुछ भी नहीं था burgers में. He became very obese. So one of the most fittest person in the world became so obese. And ultimately, then उसने वो experiment छोड़ दिया. But लोगों को realize हुआ कि how harmful these burgers are. Fine, all this fast food is. Second, day before yesterday, the most obese child in the world got now got operated, and child ka age is just 7 years. When he became, yes, 192 192 kgs, the weight of a child. Normal child जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लग गया, उसके पेरेंट्स ने उसको मैगी इंस्टेंट नूडल्स खिलाना शुरू कर दिए, उसकी आदत उसको लग गई, एंड अल्टीमेटली 7 8 10 साल का होते होते ही बिकेम सो ओबेस कि ही कुड नॉट इवन वॉक फॉर मोर देन 250 मीटर्स. स्कूल जाना वो सब तो छोड़ ही दो, वो 250 मीटर्स भी से ज़्यादा चल नहीं पा रहा था. So all this are some of the negatives of this food, genetically modified food. I am taking an example of a processed food, but it is genetically modified food also. So how to stop this? So the countries who are signatory to the Cartagena Protocol, I'm sorry, it is Cartagena Protocol. This is the protocol which tries to regulate the movement of the genetically modified food, and therefore it is known as the biosafety protocol. Fine. So if India is one country which is importing the food from maybe from Korea, from Australia, etc. So for this, Australia and Korea should give India complete information of what is going on in the food se zyada in the food products. Jam में whether the tomato being used or tomato ketchup में tomato being used is genetically modified or not, and this has to be done by the companies, and because it has to be done by the companies, there is advanced information exchange जो हमारे इसमें भी है, Rotterdam Convention में भी है. But if the companies do not tell them कि इसमें genetically modified food है, so but the customs unions of these countries are connected through each other, so if any shipment of genetically modified food comes, it is automatically updated in the Indian Customs Department कि ये ship में ये container है and इसमें ये genetically modified food है. So that is the key point regarding the Cartagena Protocol. So ये 2 points आपको याद रखने हैं. First point अभी तक UPSC ने पूछा है, biosafety protocol. Second, we are going slightly into the depth कि there is advanced information procedure and there is access clearing houses, customs clearing houses, which will automatically give the information of the Cartagena Protocol. Fine. So Cartagena Protocol, the Cartagena Protocol or the biosafety protocol, the Cartagena Protocol or the biosafety protocol is, I guess I have already told you, stripes, M stripes is the tigers, is the protocol governing the movement of LMOs, living modified organisms, resulting from modern biotechnology. The protocol tries to protect the biodiversity from the threats
The protocol tries to protect the biodiversity from the threats of living modified organisms. From the threats of living modified organisms. And therefore, it establishes advanced informed agreement. It establishes advanced informed agreement. Establishes advanced informed agreement in which a country should give complete information to an importing country. Should give complete information to an importing country about the organisms in their territory. About the organisms in their territory. It also establishes biosafety clearing houses. Biosafety clearing houses जो customs union will share the information for exchange of biosafety clearing houses for exchange of information on living organisms. For exchange of information on living organisms. On living organisms. So solve this question. Basel Convention on transboundary movement of hazardous goods. Rotterdam Convention on prior informed consent on chemicals and hazardous goods. So 2B. Stockholm on persistent organic pollutants and Cartagena on living modified organisms. Fine. This is your past year question. और यही शॉर्टकट यूज किए थे, यही शॉर्टकट्स यूज किए थे इन द क्वेश्चंस. ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा लिखा था, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस गुड्स. सॉरी.
Coming to the next convention, tulsi, haldi, adrak ka use. Do you have to, what is the use of tulsi? खांसी जब होती है तो तुलसी के पत्ते, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए तुलसी के पत्ते, हल्दी का दूध जब सर्दी हो जाती है, जिंजर जब गला थोड़ा दर्द होता है तो जिंजर. दिस इज ट्रेडिशनल नॉलेज, इट इज नोन टू ईच एंड एवरीवन. फाइन. But now company comes in India, it sees कि this is the traditional knowledge, it takes up that product, patents it. सेलिंग करना हनी टस के नाम पे इज डिफरेंट, विक्स के नाम पे इज डिफरेंट, बट मैं ही हनी से बनाऊंगा कि पेटेंट लेना हनी टस के नाम पे, इट इज डिफरेंट थिंग. पेटेंट्स इट, चुराता है इंफॉर्मेशन. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज मेक्स अ प्रोडक्ट एंड फिर वो आपको बेचता है एट वेरी वेरी हाई प्राइस. सो ये दिस इज एंड इसका जितना भी this is done by many of the multinational companies. So whatever the profit they make out of this, it is invested back in their own country. And India becomes poor, Nepal remains poor. India में इतना फर्क नहीं because our laws are still very strong. But this is Madagascar. I will not take the name of a company. चलो नाम भी ले लेता हूँ. Novartis is a German company. Fine. So Novartis makes उसका 52% of profit from Madagascar and gives only 2% to the Madagascar in return. Fine. This is Basel Convention is for the transboundary movement of hazardous good. Basel Convention इतना ज़्यादा ये नहीं था. Basel Convention से what I told you, it was to stop the dumping from the developed to the developing nations. So Basel Convention साइन होने के बाद अफ्रीका में क्या हुआ, हर फार्मर को 100 रुपया देते थे इटालियन गवर्नमेंट, और जितने भी हजार्डस गुड्स थे वो नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज में बेचती थी. सिर्फ क्या करती थी वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स है, वैसे वहाँ पे वो स्कीम चलाया था. इट यूज टू गिव टू द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट यूज टू गिव टू द पीपल. एट व्हाट कॉस्ट? 100 रुपीज में पूरे कंट्री को खरीद लिया, उनकी हेल्थ को खरीद लिया था. राइट. आई कैन से दिस ओनली कि उससे इट यूज टू. सो इसलिए अफ्रीका के लिए देयर केम अ स्पेशल कन्वेंशन नोन एज बाकोयामा कन्वेंशन, जो हमें करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बेसल वॉज अ फेलियर. टेस्ट सीरीज में पूछा होगा, यूपीएससी नहीं पूछेगी बिकॉज इट इज अ रीजनल कन्वेंशन. फाइन. सो to stop all this, there is a next convention that is the a part of CBD कि आपको sell करने की जरूरत नहीं. When if you are selling in some other countries, if you are making this from Indian knowledge, don't sell in India, sell it in some other countries, but you have no right to get patented. And if there is a patent, you should at least invest 50% of profits back in India, and that is what is the Nagoya Protocol. So can I say it is a protocol against biopiracy? And the famous cases of biopiracy you already know. Basmati rice patent कर लिया था NRI की company based in USA. फिर government of India had to fight a case कि नहीं, basmati rice is Indian. It is grown in each and every field in Punjab, Haryana, and तो उसमें कोई patent की कोई खास बात नहीं, because patent is done only on new invention, discovery or new usage of already existing product. अगर उसका कोई new use मिला तो then only you will get patent. Fine. And patent is valid for 20 years. So you have to understand. Second ऐसे biopiracy का केस हुआ था तुलसी का. थर्ड ऐसे ही हुआ था हल्दी का. This all were patented by US का companies. ये सब US की companies करती है, European companies नहीं करती. They are environmentally good, they are sustainable. But US की companies, they want to make profit, and therefore to stop all this, government of India used to fight a case, or NRIs used to fight a case. Then government decided कि जितना भी आयुर्वेदिक knowledge है सब free में बांट दो नेट पे, ताकि पेटेंट ही नहीं होगा. पेटेंट विल बी ऑन समथिंग विच इज न्यू. अब जितना भी आयुर्वेदिक नॉलेज है और जितना भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, गवर्नमेंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, व्हाट इज नोन एज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. और ये ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है. अब कोई कंपनी पेटेंट ही नहीं कर सकती. फाइन. जिसको देखना है देख लो, हल्दी की यूज जिसको देखना है. So this is because our traditional knowledge, and उसके लिए the protocol is Nagoya protocol. See, you have to understand the names भी. इसीलिए Nagoya is Japan. Japan is same like us. Traditional knowledge is very high there in the eastern. So all these countries have come together. Meeting Nagoya में हुई. यही अगर Washington protocol होता तो protect करते. Fine. But what you have to understand, Nagoya protocol is exactly in opposition to TRIPS.
ट्रिप्स कहता है देयर शुड बी प्राइवेट यूज ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज, ये कहता है देयर शुड बी कम्युनिटी यूज. ट्रिप्स कहता है देयर शुड बी प्रॉफिट एंड पेटेंटिंग, ये कहता है देयर शुड नॉट बी प्रॉफिट एंड पेटेंटिंग. ट्रिप्स इज ऑफ WTO, दिस इज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. WTO is obviously a body which is not US based, it is कहाँ पे है WTO? Geneva, but it is based by the, it is dominated by the business people. Fine. So CBD versus TRIPS. So next thing is Nagoya Protocol. Nagoya Protocol on access and benefit sharing. Nagoya Protocol and the access and benefit sharing. It is about fair and equitable sharing of the benefits. It is about fair and equitable sharing of the benefits arising from modern biotechnology. Arising from modern biotechnology. Arising from modern biotechnology. It tries to fulfill the third goal of Convention on Biodiversity. It tries to fulfill the third goal on the Convention on Biodiversity. It was adopted in 2010 at Nagoya in Japan. It was adopted in 2010 at Nagoya in Japan, and it tries to provide legal certainty and clarity. Legal certainty and clarity. Provide legal certainty, clarity, comma, appropriate rules for the trade in genetic and food resources. Trade in genetic and food resources. Thus, the Nagoya Protocol helps in preferential trade agreements, especially related to the genetic resources. Preferential trade agreement, especially related to the genetic resources. What is a preferential trade agreement? Can I say a trading bloc between nations or a group of nations in which the trading is done at option 1, 0 tariffs, option 2, reduced tariffs. 0 tariff, free trade area. Fine. Reduced tariffs. So WTO के main points है ये. Obviously India is a signatory to this, and कौन सी country नहीं होगी signatory? USA. So next, USA is neither a signatory to Nagoya Protocol nor a signatory to CBD, Convention on Biodiversity. Neither a signatory to Nagoya Protocol nor a signatory to Convention on Biodiversity. Because Russia जो है, it is signatory to CBD but it has not signed Nagoya. You have to understand, genetic resources वहाँ है ही नहीं. कल ही हमने देखा, ट्रॉपिक्स में ही सारी genetic diversity है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं. Over glorified regions है, that is, I should not criticize. But what is the difference between Europe and Northeast India if we keep it clean? Kashmir and Northeast India if we keep it clean? Not major difference. ये हाँ, वहाँ पे architecture बहुत अच्छा है. Otherwise, India is very good. The same thing is happening. Madagascar is very good. Tropics are very good, but they are exploited.
and which is supporting the architecture and the industrial development of the temperate regions. The same thing is there. So यहाँ के पैसे स्विट्जरलैंड में महल बन जाते हैं. So next point is CBD and TRIPS both are legally binding. India is signatory to both और यहाँ से problem होता है. Both are legally binding, but their obligations are totally opposite. Because TRIPS tries to introduce private rights, while CBD tries to recognize community and national rights, over the biological resources. Understood? TRIPS tries to introduce private rights, रैनबैक्सी का राइट्स, नोवार्टिस का राइट्स, डाबर का राइट्स. CBD किसी एक का राइट नहीं, पूरे इंडिया का राइट. इंडिया का राइट मतलब कम्युनिटी का राइट्स, नो पेटेंटिंग. Compulsory licensing is an exception which is done in India. So India में किया है. Now there are some of the countries जिसमें दोनों सिग्नेटरी है लाइक इंडिया. तो इंडिया हैज टू नाउ डू फाइंड अ पाथवे बिटवीन, अदरवाइज तो केसेस होती रहेंगी. फाइन. देयरफॉर द सिग्नेटरीज are coming back, are developing certain policies such as India's compulsory licensing policy. To stop the discrepancies between these two. In the COP CBD at Nagoya, कुछ नहीं, कल वाला ही है. COP CBD 2010 at Nagoya, it was decided 2 points. First, to declare the year 2011 to 2020 as the universal decade or the world decade on biodiversity. And second point, to set 20 targets known as Aichi biodiversity targets. क्यों Aichi? Because the place in Japan. Otherwise Maharashtrians will think something else. The Aichi biodiversity targets. So now you are not supposed to do 20 targets, but you are supposed to do the 5 goals. So these are the targets having 5 goals.
These are the targets having 5 goals. Goal 1, protection of biodiversity. Goal 1, protection of biodiversity. Goal 2, sustainable use of its components. Sustainable use of its component. Goal 3, capacity building. Goal 3, capacity building. Goal 4, fair and equitable sharing. देखो वही वर्ड्स है, fair and equitable sharing. And goal 5, protection of habitats. Goal 5, protection of habitats. Goal 5 is the protection of habitats. Fine. COP CBD 11. COP CBD 11. आईची टारगेट्स करके जाना है तो करके जाओ या मत करके जाओ, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. COP CBD 11 कहां पे हुआ था? एट हैदराबाद. अभी तक इंडिया में कोई यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस हुआ है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज? नो. COP UNFCC हुआ नहीं है. COP CBD हो चुका है हैदराबाद में. एंड COP ऑन UNCCD हुआ है इंडिया में, डेजर्टिफिकेशन का हुआ है या होने वाला है? होने वाला है, इस सितंबर में होने वाला है. सो सेकंड मेजर कॉन्फ्रेंस इंडिया में होने वाला है. फर्स्ट हो चुका है और थर्ड वी डोंट नो व्हेन इट विल हैपन. फाइन. सो इट वाज द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस. It was the first major conference in the international decade on biodiversity. In the international decade on biodiversity. In the international decade on biodiversity. Major outcomes. See, we are obviously not supposed to do every outcome because now this is very old. So major outcomes: the role of traditional knowledge. The role of traditional knowledge in biodiversity conservation. In the biodiversity conservation was recognized. Role of traditional knowledge in the biodiversity conservation was recognized. Second, World Bank, second is it also recognized this is very simple. A meeting is taking place, चाहे वो CBD की हो UNFCC की हो. याद रखना है इस मीटिंग में एक ही होता है. There are two group of countries, developed and developing. इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है कि कौन who is responsible. फिर they are historically responsible और ये कहते हैं कि हमें पैसे दो. Fine. So that is second. Developed countries. It also recognized the role of developed countries. Full stop. Therefore, the developed countries decided to double the funding over next 8 years. मतलब 2019 तक double the fundings of over the next 8 years.
to help the developing countries, to help the developing countries meet Aichi biodiversity targets, to meet Aichi biodiversity targets. सो डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि विल गिव यू $15 बिलियन के बदले $30 बिलियन, डबल द फंडिंग. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम developing countries such as India agreed to give fund towards CBD. ब्रैकेट में इंडिया ने $50 मिलियन दिए थे उस समय. इंडिया गिव $50 मिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन. If the world is giving 30 billion, why will India give 50 billion? It is $1 million. $50 million India. Next, COP11 focused on marine biodiversity. ये सारा फर्स्ट टाइम हुआ. इससे पहले देयर वाज नो फोकस ऑन द मरीन बायोडाइवर्सिटी. फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस्ड ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी. एंड देयरफॉर along with the green economy, the focus shifted on blue economy. And recently, कौन सी country became the first country to launch a blue bond? Seychelles. And recently, Seychelles became the first country to launch blue bonds. उस COP11 में Seychelles was selected, and you can see उसका repercussion अभी. This is how the things are linked. कि COP11 में first time marine biodiversity पे focus. उसमें the countries, 3 countries were selected. One was Seychelles, one was Tonga, and the other was some of the smaller nations of the Pacific. उसमें से Seychelles became the first country to launch a blue bond. Seychelles became the first country to launch sovereign blue bonds for marine protection. Blue bonds economy का topic है. What is the sovereign blue bond? Government of Seychelles is going to sell some bonds. Now because it is a government bond, it is a G bond, मतलब gold bond मतलब जिसमें पैसे कभी डूबेंगे नहीं. So many of the countries will buy those bonds. Bond anything, it is a promissory note. Promissory note means if you buy at 8%, will take it back at maybe 10%, 8.5%, ताकि आपको लॉस नहीं होगा 3 साल के बाद या कुछ भी. या आपने अगर 100 रुपए का लिया तो हम फिर से खरीद लेंगे 108 रुपए में 2 साल बाद, तो आपको 8% का प्रॉफिट. एंड इसमें जो गारंटी वाला होता है, जिसमें कम होता है प्रॉफिट बट गारंटी होता है, वो है सॉवरिन बॉन्ड्स, दैट इज द जी बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स. So Seychelles has given, Seychelles ka bond will be bought by the many investors, and that money will be then only for conservation of marine ecology. Fine. बाकी कुछ नहीं इसमें. It is base of economics. So you don't have to study what is known as a blue bond. So it focuses on blue economy. कोई लिखने की जरूरत नहीं. It focuses on blue economy. I am asking you, what do you mean by blue economy? What is blue economy? Not water resources. It is marine ecosystem, not water resources. So blue economy is a term. Blue economy is a term which focuses on
sustainable use of ocean resources, sustainable use of ocean resources for economic growth, improved livelihood, improved livelihood and सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बाकी के सब वही है. One of the major focus of blue economy is improving blue carbon. क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज द मेजर फोकस. अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? मरीन इकोसिस्टम. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज नाउ ब्लू कार्बन. किया था ज्योग्राफी में, बताया था. सो द कार्बन दैट इज स्टोर्ड इन coastal as well as marine ecosystem. This is the basic difference. Marine ecosystem में भी and coastal में भी. So mangroves में भी आएगा and even in the oceans. So I'll again quickly repeat it. Blue carbon, ये सारे current के topics है. Blue carbon, blue economy. Blue carbon is the carbon that is captured by the world's oceans. World's oceans. And the coastal ecosystem. And the coastal ecosystem. And the coastal ecosystem. क्यों करंट में है? So it includes the carbon. It includes the carbon in mangroves. In mangroves, tidal marshes, seagrass, corals, etc. Seagrass, corals, etc. Seagrass, corals, etc. Why it is in the news? Not Seychelles. ये अलग प्रोग्राम है. Blue Carbon Initiative. It is in the news because of the Blue Carbon Initiative. The International Blue Carbon Initiative. The International Blue Carbon Initiative. International Blue Carbon Initiative is a global coordinated program. Is a global coordinated program that focuses on restoring the world's coastal ecosystem to mitigate climate change. To mitigate climate change. To mitigate climate change. Because 83% of the global carbon is circulated through oceans. 83% of global carbon is circulated through oceans. The Blue Carbon Initiative, ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है बट 2018 का ही है, ये जून का करंट अफेयर्स है. दैट इज वाई इसकी आइडिया थोड़ी कम होगी. द इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, the International Blue Carbon Initiative is a joint venture of IUCN, and major countries of the world, which include India. Major countries of the world, which includes India, comma, and UNESCO.
So is it a intergovernmental organization? Yes, it is an intergovernmental treaty. किसने कौन लीड कर रहा है इसको? यूएसए. कोई इतना जरूरत नहीं है. So it is International Oceanographic Union, which is an organization of specialized agency of UN, UNESCO, which is a specialized agency of UN, and as well as IUCN, which is a NGO. Now you have got international institutions का handouts. फाइन. उसमें यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी अलग से दी है एंड अदर एजेंसीज आर गिवन सेपरेटली. गिव इट अ वेरी वेरी फास्ट रीडिंग. उसमें से काम का क्या होगा? लास्ट का पार्ट जिसमें ऑल द ग्लोबल रिपोर्ट्स हैव बीन गिवन इन द टैबुलर फॉर्मेट. एंड उसका एक ही ट्रिक है, वन इन द मॉर्निंग, वन इन द इवनिंग, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल. So Santosh sir is वैसे भी covering everything. Those who are attending, those who are not attending Santosh sir का lectures, those who have not joined this program. So you can use it. This is Santosh sir का material सारे background के साथ होगा. My material is only factual. That is the only difference. So even if you are attending Santosh sir का program, that will help you in revising. Fine. Next. ये सबसे इम्पॉर्टेंट. इन द स्कॉप 11 national biodiversities strategies and action plan forum, and the action plan forum was launched. ये important इसलिए because it is given only in yearbook. National Biodiversity Strategies and Action Plan Forum was launched. National Biodiversity Strategies and Action Plan Forum was launched. So which forum was launched? किसने लॉन्च किया होगा? Don't go by the word Government of India. National, it is a joint venture of UNEP, UNDP, UNEP. It is a joint venture of UNEP, UNDP, United Nations Environment Program, United Nations Development Program. पैसे चाहिए तो GEF, Global Environment Facility, and Biodiversity है तो obviously कौन होगा? See. Don't go by the word national. Fine? It is nothing national in that. It is an international. क्या है ये? Forum. What do you do in forum IS? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कि कौन सा क्लास अच्छा है, कौन से नोट्स अच्छे हैं, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे रूम नहीं है, किस टीचर को कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन टाइम पास करता है, कौन जल्दी आता है, कौन लेट आता है, ये सब आपको फोरम में मिल जाएगा. राइट. इसमें भी वही है, फोरम है ये. इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट रिगार्डिंग फोरम IS, नॉट रिगार्डिंग IS, बट रिगार्डिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. क्या अलग से क्या पढ़ना है? फोरम है तो इट हैज टू बी ऑनलाइन. ऑनलाइन में फोरम में क्या करोगे? यू विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. अब इसमें क्या वर्ड्स आ जाएंगे? बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट स्ट्रैटेजीज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी. राइट. सो इट इज एन ऑनलाइन फोरम which will provide targeted information. Targeted information ही है, such as best practices, guidelines for biodiversity conservation. For biodiversity conservation. Best practices, targeted information regarding best practices
online information for biodiversity conservation. For biodiversity conservation. दो तीन और चीज़ें हुई विच आई एम नॉट टेलिंग यू. साइंस एक्सप्रेस वॉज लॉन्च्ड, तो आपने उसके बाद बहुत बार साइंस एक्सप्रेस पढ़ा होगा. फाइन. एक अवार्ड लॉन्च किया था, एक इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था. अवार्ड का नाम था राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. अभी तो गवर्नमेंट पूछेगी नहीं है, स्पेशली इलेक्शन ईयर में. एक इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ था इंडिया में, राजीव गांधी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट हैदराबाद. वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. फाइन. सी व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस. कांग्रेस अगर होती फिर भी हम पढ़ते, क्योंकि थोड़ी माइल्ड पार्टी है. ये तो एकदम स्ट्रिक्ट है. नहीं, ये नेहरू, ये हमारा. सो जो हमारा है वही हम पूछेंगे. दो तीन चीज़ें जो वो अवॉइड नहीं कर सकते वो है सीजेड, वो एक है मनरेगा और एक है जननी सुरक्षा. वो सब बाकी तो कुछ नहीं आने वाला. इंदिरा आवास योजना का भी नाम चेंज हो गया है. जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन का भी नाम चेंज हो गया है. सो ब्लू रिवोल्यूशन का भी तो नाम चेंज हो गया है. फाइन. सो दिस इज वेयर नाउ यू, दो इट इज नॉट फॉर प्रिलिम्स, यू कैन यूज दिस लोगो. मतलब जो उसकी पंच लाइन थी ऑफ कॉप 11 फॉर मेंस, एंड इट वाज nature protects if she is protected. You can use it anywhere. Yes. No, it is not related. It is an online forum for the best practices, targeted information of how the biodiversity conservation should be done. And therefore, this forum is a joint venture of CBD, GEF, UNEP, UNDP. It is not related to CBD. We are doing all the international agreements and institutions related to biodiversity. उसमें से एक CBD है, एक sites है, एक traffic है. Getting it? One is COP 11. And see, GEF generally, but direct question कभी नहीं आएगा. It is going to give money, but if it is going to give money for climate change, it is going to give it to Ministry of Environment, Forest and Climate Change. But if it is going to give for biodiversity protection, you will be surprised to know किसको पैसे मिलते हैं? नाबार्ड को. क्यों नाबार्ड? Who works for rural upliftment in India? नाबार्ड. And the last thing in the biodiversity is, the last thing in the biodiversity is International Treaty on Plant Genetic Resources. Plant genetic resources for food and agriculture. For food and agriculture. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. किसके अंदर होगी ये ट्रीटी? किसके अंडर? Food and Agriculture means it is under FAO. Fine. So it is under FAO. It is under FAO. This treaty is on the conservation and the sustainable use. बाकी के अंदर की मीनिंग सेम है. This treaty is on conservation and sustainable use
treatise on the conservation and sustainable use, as well as fair and equitable sharing of benefits. Fair and equitable sharing of benefits for, तीनों वर्ड सीबीडी जैसा है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, बट क्या है, दैट इज फॉर बायोडाइवर्सिटी, दिस इज फॉर फूड क्रॉप्स, फॉर फूड क्रॉप्स, फॉर फूड क्रॉप्स, so that food security and sustainable agriculture is achieved. Food security and sustainable agriculture is achieved. This is an international treaty, एक कीवर्ड है इसमें, which focuses on farmers' rights, so that the farmers in the developing nations are not exploited. कुछ नहीं है, the same thing is there, it focuses on the farmers' rights. Farmers in the developing nations are not exploited. Take one question. Consider the following treaties. Consider the following treaties or conventions. वन, टू ऐसे लिखना, 3, 4 रामसर कन्वेंशन 4, 5th वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, 6th यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, and 7th Bonn Convention. Which of the above conventions are associated with biodiversity conservation? Tell me the answer. कहीं नहीं मिलेगा, अप्लाइड क्वेश्चन है. बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन पता है, यू नो द आंसर फॉर दिस. सीबीडी तो है, साइट्स यस फॉर बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, इट इज ऑल्सो वेराइटी बट इन द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. रामसार बायोडाइवर्सिटी इन द वेटलैंड्स. World Heritage Conservation, is it on biodiversity? Yes, Biosphere Reserves UNESCO का program as well as UNESCO का World Heritage Sites, दोनों are related to biodiversity. World Heritage, देखो World Heritage इसलिए confusing लगता है because we generally think Taj Mahal. Now you have to think Western Ghats also as World Heritage. So it is natural heritage, artificial heritage. Fine. Convention to combat desertification, yes, otherwise desertification will destroy the biodiversity. Bonn Convention, it is on the convention on the migratory animals and birds. So answer is all of the above. ये एक याद रखना, these are the 7 conventions related to biodiversity. यूपीएससी ने इसमें से पहले एक बार 3 पूछे हैं, नेक्स्ट टाइम 3 पूछे, यही क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है. दे हैव जस्ट चेंज द कन्वेंशंस एंड बट सब टाइम आंसर हैज बीन ऑल ऑफ द अबव. मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया है.
ऑल ऑफ द अबव इन्हीं कन्वेंशंस में से, ऐसे नहीं है कि यूएनएफ ट्रिपल सी भी आएगा उसमें. इट इज फॉर क्लाइमेट चेंज, इट हैज नथिंग टू डू विथ बायोडाइवर्सिटी. राइट. अब आस्क योरसेल्फ, खत्म हो गया हो गया हो गया, ये तो नहीं हुआ है क्योंकि ये मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं. इसमें करंट में क्या है, आस्क योरसेल्फ. जहां जहां ब्रिटिशर्स का कॉलोनीज थी, बट उसमें से विच हैज बीन एडेड ओनली इन, दिस हैज बीन एडेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. नहीं, सेम ही यही है. सेम सेम सेम. यूनेस्को के दो है, नेचुरल, आर्टिफिशियल. नेचुरल, आर्टिफिशियल दोनों एक ही है. कन्वेंशन एक ही है दोनों का. यस, उसमें नेचुरल भी आएंगे, उसमें आर्टिफिशियल भी आएंगे. फाइन. सो आपका एक प्रीलिम्स के लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन पता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर. फाइन. हिस्ट्री में आप पढ़ते ही वो इंडो ग्रीक आर्किटेक्चर वो सब, उसमें आपको देखना है गोथिक आर्किटेक्चर, शार्प टॉल बिल्डिंग्स, टॉल टावर्स. सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टेट सर्विसेज पूछेंगे कौन सी साइट एडेड है, यूपीएससी पूछेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द क्वेश्चंस. यूपीएससी विल गो डीप. फाइन. So this you will have to do. यूपीएस स्टेट सर्विस पूछेंगे कितनी साइट्स है, सो कितनी साइट्स है, 37. हुआ है बॉन कन्वेंशन, क्लास में हुआ है, नहीं हुआ है. क्यूईपी में हुआ है, क्लास में हुआ है, नहीं. सो बॉन कन्वेंशन. It is a convention on the conservation of, it is the convention on the conservation of migratory species, migratory species of wild animals and plants, birds and birds. How will plants migrate? Fine. Bond convention on the migratory animals and birds. Nain. This convention aims to conserve. This convention aims to conserve this convention aims to conserve the migratory birds and animals, migratory birds and animals, ब्रैकेट में टेरेस्ट्रियल, मरीन, एवियन, तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड है. टेरेस्ट्रियल रोडवेज, मरीन वाटरवेज एंड एयरवेज, दैट इज whales, dolphins, tigers, elephants as well as birds. Terrestrial, comma, marine and avian. Avian मतलब birds. Through their range, through their range, through their range मतलब कहाँ कहाँ, RNG रेंज, उनका कितना रेंज है. आप पढ़ते हो मिसाइल, ब्राह्मोस मिसाइल का रेंज कितना है. सिमिलरली साइबेरियन फाल्कन का रेंज कितना है, कितना किलोमीटर जा सकता है, दैट इज देयर रेंज. कल ही हमने कहा स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड इज नारकोडम हॉर्नबिल, क्योंकि वो सिर्फ नारकोडम आइलैंड्स के आसपास ही रहेगा. एक हमने बहुत पहले पढ़ा था कोंडाना रैट, स्मॉलेस्ट रेंज. फाइन. It divides the animals into two categories. It divides the animal into two categories.
1, appendix 1, माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, कुछ नहीं सेम है, माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन. And appendix 2, migratory species that require international cooperation, that require international cooperation, that require international cooperation. India has signed the Bonn Convention. India has signed the Bonn Convention. कब साइन किया था? Last to last year. India has signed the Bonn Convention, especially with the special focus on conservation of Amur falcon, on the conservation of Amur falcon, on the conservation of Amur falcon. कहाँ पे है अमूर फाल्कन? कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम द साइबेरिया. फाइन. कौन सी रिवर के पास? अमूर रिवर. यस. सो व्हाट इज द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ अमूर रिवर? It forms a boundary between China and Russia. This is how you should approach in next 1 month. जो न्यूज़ में है उसका बैकग्राउंड खुद ही से पूछो. जो पता नहीं है, do it from the books rather than doing each and everything except for history, because history में कुछ current नहीं है. But whatever is in the current, ask yourself and do the only that background information. It will help you. It will easily help you cover 60-70 questions. Amur falcon. In India, the Amur falcon. In India, the Amur falcon is mostly found in the state of Nagaland. It is mostly found in the state of Nagaland. It is mostly found in the state of Nagaland. In the state of Nagaland. क्यों अमूर फाल्कन? बिकॉज इट इज हैविंग द लॉन्गेस्ट रेंज. कितने डिस्टेंस वो माइग्रेट करता है साल में? इट माइग्रेट्स 20,000 किलोमीटर्स इन अ ईयर and mostly it is found in the Nagaland. So traditional Hornbill Festival Nagaland. पिछले साल से Falcon Festival Nagaland. So Falcon Festival is also celebrated in Nagaland. So Nagaland this year for the first time, celebrated Amur Falcon Festival with the help of, you already know, कौन help करेगा इनको? Bombay Natural History Society and International Birdlife International, with the help of Bombay Natural History Society, which coincided with post-harvest festival, which coincided with the post-harvest festival, which coincided post-harvest festival known as Toku Imong. Toku Imong. Have you bought India Yearbook, anyone? किसी ने उसका ये किया है, एटलीस्ट उसका जो समरी अगर इंडिया ईयरबुक है तो बहुत ही अच्छी, नहीं है तो उसमें से ये जितने भी फेस्टिवल्स है, दिस ऑल कम्स फ्रॉम द
लास्ट पेजेस जो पिछले साल चारों फेस्टिवल थे, विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर इन करंट अफेयर्स, और डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। स्टेट नागालैंड, एग्रीकल्चर फाइन, पावर, टूरिज्म, फेस्टिवल्स, सो यहाँ के फेस्टिवल्स, नो नीड ऑफ डूइंग और स्पेशली बाइंग द दिस थिंग, आई विल गिव यू ऑन सैटरडे एक सेंड ऑफ गिफ्ट जो मैम ने बोला था, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा नोट्स द ऑन द पार्टी। मिनरल्स देखो, और पार्टी चाहिए इनको, सो और गिफ्ट मिनरल्स ऑल्सो, क्रॉपिंग पैटर्न भी। Before I go, a small thing, there is something what is known as क्यों? क्योंकि इंडिया has stopped this challenge इस साल, so Bonn challenge. Anybody knows what is Bonn challenge? Bonn Convention we know. What is Bonn challenge? Bonn challenge was taken up, was given by Germany, Bonn conference के समय, on reforestation or afforestation, and सबसे अच्छा afforestation has occurred in the India. So the current affairs is India. Can I continue? India became the first country in the world. India became the first country in the world to launch a country progress report card. To launch a country progress report card on Bonn challenge. On Bonn challenge. ये है 2019 की न्यूज़, 2018 की न्यूज़, सॉरी नॉट 19 की, वही सितंबर का मंथ। Bonn challenge
Bonn challenge is the challenge for restoration of country's forest land, restoration of country's forest land. It is a global effort, underline the word global effort, launched by Germany and IUCN, launched by Germany and IUCN to restore 150 million hectares of the world's degraded, to restore 150 million hectares, मतलब somewhere around 300 एकड़, 300 million acre, 150 million hectares of world's degraded and deforested lands, by 2020. By 2020. It is estimated, क्या, no need of writing, अगर लिखना है तो लिखो. It is estimated कि once this forested lands are restored, it will save the world $84 billion. क्योंकि, so it is estimated that approximately 84 billion per year, 84 billion per year would be the positive outcome in the income opportunities for the rural communities, India had committed to restore 13 million hectares of degraded forest land under Bonn. Now this is the timeline of major conferences regarding the United Nations का. इस बीच में कहीं तो will come what is known as Green Climate Fund, the biggest fund जिसके लिए झगड़ा हो रहा है. I'll give you first like a story, उसके बाद समझना is very easy. UNFCCC was launched. One of the first protocol of UNFCCC was Kyoto. Now Kyoto said that each and every country should reduce उसका greenhouse gas emissions so that world का average greenhouse gas emissions will be reduced by 5% prior to certain pre-industrial level by 2012. ठीक है, मतलब in simple words, Kyoto had asked the countries to reduce उसका greenhouse gas emissions. हर country का target was different. But UNFCCC and Kyoto divided the countries into two groups. एक ग्रुप जिसमें रिच कंट्रीज थे जिसके लिए द टारगेट वाज बाइंडिंग, एक ग्रुप जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज थे लाइक इंडिया, चाइना, जिसके लिए द टारगेट वाज नॉन बाइंडिंग. फाइन. सो यहां से झगड़ा शुरू हुआ. बट व्हाट वाज द गुड थिंग अबाउट क्योटो, क्योटो वाज द फर्स्ट प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल मीन्स इट इज ऑब्वियसली लीगली बाइंडिंग. इट वाज द फर्स्ट प्रोटोकॉल विच टॉक्स अबाउट हिस्टोरिक इनजस्टिस, जो वर्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूज किया था, हिस्टोरिक इनजस्टिस रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. Historic injustice, who are facing the problems of climate change? Tropical nations, developing nations like us. कब हम इंडस्ट्रियलाइज हुए? 1960s, 70s, 80s में. कब आया क्योटो प्रोटोकॉल? 1995 में. But who is responsible from last 150 years for climate change? Developed nations, जिनमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ. So not only USA, it is USA, UK, France, all the European nations, including Russia. Russia was much more industrialized before the World War. So Kyoto says
कि see you are historically responsible for greenhouse gas emissions and therefore it is more binding on you, while India जैसे country के लिए जो अभी कर रहा है and it is their right to come out of poverty, so it is not binding on them, and therefore Kyoto talks about the principle which is known as पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल। क्योटो का प्रिंसिपल है पोल्यूटर पेस। इंडिया में भी ये प्रिंसिपल यूज होता है, क्लीन एनर्जी सेस और क्लीन कार्बन सेस। हर कार्बन कंपनी, हर कोल कंपनी के ऊपर एक सेस दिया जाता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एन क्लीन कार्बन सेस। सो पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, और इट टॉक्स अबाउट common but differentiated responsibility. Common responsibility here to reduce the carbon emissions, but the responsibility is differentiated between Annex 1 and Annex 2 nations. Annex 1 and non-Annex 1 nations. I will explain what is Annex 1 and non-Annex 1 nations. But Kyoto was binding on Annex 1 nations, it was not binding on Annex 2 nations like us. Now, Kyoto ka first commitment period ended in 2012. And from 2012 to 2020, there was supposed to be the second commitment period, what is known as Kyoto 2. इंडिया चाइना खुश थे क्योटो में, बिकॉज इनको पैसे मिल रहे थे, इनको दिल्ली मेट्रो जैसी टेक्नोलॉजी मिल रही थी, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। बट देयर वर सम ऑफ द कंट्रीज जस्ट सच एज पिग्स नेशन, एक जमाने में डेवलप, बट इटली इज नॉट एज डेवलप्ड। वी कैन नॉट से इटली इज एज इंपॉर्टेंट एज इंडिया टुडे इन द वर्ल्ड अफेयर्स, थोड़ा है उसका हिस्टोरिकल दिस थिंग। बट व्हेन मोदी गोज टू एनी कंट्री, उसका हेडलाइन का न्यूज आता है, एंड व्हेन इटली का प्राइम मिनिस्टर कम्स टू इंडिया, हिंदू में पीछे आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 दिन बाद आता है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले तैमूर खान की वो सब की फोटो की वो क्लास एक अलग है, टाइम्स का हिंदू का क्लास एक अलग है। आपको भी हिंदू कब तक पसंद है? जब तक यूपीएससी है। वंस इट इज फिनिश्ड हु विल रीड हिंदू, फाइन। सो आज ही मैंने हिंदू बंद कराया है। वाई टू वेस्ट 10 रुपीज पर डे फॉर नेक्स्ट 2 months व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू रीड हिंदू? सो fine. So why, that is what is Hindu. So you have to understand these pig nations या countries like Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, जो रशिया के parts थे, which were once upon a time developed but today poor. They said कि हमें क्यों Kyoto protocol में you are giving us some binding agreements, put us in Kyoto 2, or in the Kyoto 2 they said put us in developing nations. जापान सेड नहीं, अभी हम पैसे दे के थक गए, हम और पैसे नहीं देंगे। सो इसके कारण क्योटो 2 डिड नॉट टेक प्लेस, एंड व्हाट टुक प्लेस इन द क्योटो 2, 3 साल नेगोशिएशन चला, एंड इंस्टेड ऑफ देम केम पेरिस एग्रीमेंट। And what is the difference between Paris Agreement and Kyoto? Unlike Kyoto, Paris Agreement does not distinguish between developed and developing nations. Paris Agreement में there is no goal. ये कहता है कि कंट्री ने कम करना चाहिए। इन द पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री विल डिटरमाइन उसका ओन कंट्रीब्यूशन, एंड व्हाट इज नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। क्योटो, इन द पेरिस एग्रीमेंट देयर इज नो डिफरेंट, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पोल्यूटर पेज, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देयरफॉर ऑल द कंट्रीज हैप्पीली साइंड द पेरिस एग्रीमेंट। दे रियलाइज्ड दैट दे हैव टू गिव द टारगेट्स, और वो टारगेट्स वेर बाइंडिंग। The targets were binding, agreement as such was not binding, fine. So USA also signed the, USA was not the part of Kyoto, USA signed Paris Agreement. But इसके बीच एक ही हुआ, countries such as India, China were saying चलो Kyoto नहीं है तो, but we are injustice के victims, give us money, टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हो तो गिव अस मनी, एंड इसमें आया ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑब्वियसली अंडर वर्ल्ड बैंक एंड जीईएफ, व्हिच सेज दैट डेवलप्ड नेशन शुड पे $100 billion per year to the developing nations, मतलब total $500 billion to the developing nations for as a fight against the climate change. यह जब आया तो USA said no, I am withdrawing from Paris. Fine. So USA, has it withdrawn from Paris? No, it has not officially withdrawn from Paris. Technical fault में अटक गया USA because
to withdraw from Paris, the terms and conditions were कि once the Paris agreement comes into force, उसके बाद 3 साल बाद country notice दे सकती है और उसके 1 साल बाद वो withdraw कर सकता है. So Paris agreement, though it was signed in 2015, it came into force in 2016. So इसके 3 साल अभी दिसंबर में खत्म हो जाएंगे यूएसए के, और फिर उसके बाद द कंसिडर हो जाएगा कि यूएसए whether it is going to withdraw or not from Paris. So USA still has time to withdraw from the Paris. But हाँ, उसने अभी तक नोटिस नहीं दिया है, उसने सिर्फ ट्रंप ने इंटेंशन बोला है कि इट इज गोइंग टू विड्रॉ, बट टेक्निकली यूएसए हैज नॉट विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट. द सेम थिंग वाज डन बाय द कनाडा. अब प्रॉब्लम ये होने लग गया, पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया एंड फ्रांस केम टुगेदर एंड लॉन्च्ड अ मेजर एग्रीमेंट नोन एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इनिशियली ओपन टू ओनली द ट्रॉपिकल नेशंस, नाउ इट इज ओपन टू एवरीवन, जो भी आ सकता है, बट ऑब्वियसली सनशाइन कंट्रीज विल बी गिवन अ चांस. क्या है सनशाइन कंट्रीज? कुछ नहीं, द सेम कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी जहां पे द सन रेज आर गोइंग टू बी वर्टिकल. दैट इज द कंट्रीज विच आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. फाइन, दिस इज वेरी इजी पार्ट. इट इज नॉट एज टेक्निकल एज सीबीडी, बायोडाइवर्सिटी. So Paris agreement nationally determined contributions, but after the Paris came in 2015, India and China started saying कहाँ है $500 billion, where is the money, you are supposed to give us money, या sign Kyoto 2. यहाँ पे अभी भी झगड़ा चल रहा है. So the next conference which took place in Bonn, it took place in Bonn, that is Bonn क्योंकि UNFCCC का headquarters है Bonn in Germany, but वैसे the conference should take place in the country which is heading that. And the country which was heading was Fiji, which is a very very small island nation. So the first conference जहाँ पे the small island nation became the head, but Fiji में it was realized कि because it was such an important conference जहाँ पे इतने जगह ही नहीं है, इतनी hotels ही नहीं है कि it can accommodate पूरे country के leaders, so it was shifted to Germany. But Fiji was the president because it was a small island nation. So उसमें Fiji ने कहा झगड़ा करना बंद करो, start cooperating, which in the Fijian language means tala noa. Tala noa means cooperation, not confrontation. क्यों हो रहा है confrontation? $500 billion के लिए. Fine? So tala noa dialogue says, कुछ नहीं है tala noa dialogue में, सिर्फ words बड़े बड़े हैं. It is saying that countries should cooperate for the climate change and not fight with each other. Fine? So they decided, okay, we are going to fight, we are going to stop fighting, and 2018 में देखेंगे what about the money. Fine? When the 2018 came, the 2018 में Katowice में फिर से USA तो आया ही, फिर से all the countries came, but there was no question of 2018 में कॉन्फ्रेंस $100 billion में सिर्फ $20 billion है, बचे हुए $480 billion 200 अगले 20 साल में कौन आएगा, कौन देगा, उसके ऊपर फिर से झगड़ा होने लग गया. अब द प्रॉब्लम हैपेंड कि इंडिया विच वाज वेरी मच वोकल इन फाइटिंग, वो चुप बैठा रहा. इंडिया ने कुछ कहा ही नहीं. इंडिया ने कहा कि नो, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है पैसों की. So the reason was because USA and India had signed a bilateral agreement saying that तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं क्यों कॉमन पूल में डाल के आपको 20 रुपया दूँ, उससे अच्छा तुम्हें 40 रुपये की ज़रूरत है, ये लो 40 रुपया, but you are saving my $100 billion. Fine? So USA and India have a bilateral agreement to fight the climate change. इसलिए पिछले साल से इंडिया चुप है. अब चाइना चिल्ला रहा है कि वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी. फाइन, इंडिया के पास पैसे आ गए थ्रू अ बायलैटरल एग्रीमेंट. फाइन, एंड यूएसए वाज वेरी स्मार्ट. Why will USA feed the world? जो उसका दोस्त है राइट नाउ इंडिया, उसको दे दिए जितनी इंडिया की जरूरत है. इंडिया शांत हो गया एंड इंडिया साइंड अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज कैटोविस आउटकम्स. एंड कैटोविस आउटकम्स में ये डिसाइड किया गया कि 2020 में हम देखेंगे 19 के कॉन्फ्रेंस में कि क्या किया जा सकता है रिगार्डिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड, एंड वी विल सी कि कितना प्रोग्रेस हुआ है. देयर इज नथिंग इन क्लाइमेट चेंज. फाइन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द, ठीक उस साल जस्ट लाइक इंडिया एंड फ्रांस हैड लॉन्च टुगेदर, यहाँ पे यूके एंड कनाडा केम, द ओल्ड कॉलोनीज, एंड दे लॉन्च्ड एन अलायंस व्हिच इज नोन एज पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, जिसने कहा कि by 2030 all the developed nations of the world will stop producing coal, and by 2045 all the developing nations will be stop producing the coal. That is the powering past coal alliance, because coal is the most important for pollution as well as for the greenhouse gas emissions. क्योंकि जितना carbon is given by coal, coal is pure carbon, petroleum is not pure carbon. ये alliance launch हुआ
and this alliance has not yet been asked in the examination, so it may be asked in the examination. या ये alliance launch हुआ and USA, China, India, Germany सब हंसने लग गए इस alliance पे. ट्रम्प का ये स्टेटमेंट है, यूके थिंक्स यूके इज लाइक अ बर्ड जिसका सर जमीन के अंदर है और उसको लगता है जो जिसको जितना उसको दिखता है वो ही पूरा दुनिया है. दैट इज हाउ कैन यू गो पास्ट कोल. हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? चाइना. Who is the second largest producer of coal? India. Who is the third largest producer of coal? USA. हम तीनों क्या इसके इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे? Who is the largest economy of Europe? Germany. France. रशिया. किसी ने नहीं ज्वाइन किया इस अलायंस को. Who is the largest exporter of coal in the world? Australia. South Africa is the major economy. Sub economy is related to the coal and nobody has joined this alliance. So right now this alliance is of USA, Canada and some small countries like Mauritius, Marshall Islands, the Reunion Islands. ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो कहती है what we face today you are going to face in the future. मतलब मार्शल आइलैंड्स ने कहा हम अभी जो डूब रहे हैं that you are going to face in the future. So join this alliance, but nobody has joined this alliance. So this is all about powering past coal alliance. But what you are going to study for prelims is uska objectives. What you are going to start preparing for prelims is what do you mean by clean development mechanism, and yahan se the topic becomes technical in nature. So this is very easy. What is difficult is only this part. ग्रीन क्लाइमेट फंड कब लॉन्च हुआ, कौन से मीटिंग में लॉन्च हुआ, इट इज अंडर विच एंड व्हाट इज उसका ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, व्हाट इज नोन बाय जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, व्हाट इज कार्बन ट्रेड, कहाँ पे होता है कार्बन ट्रेड, व्हाट इज कार्बन क्रेडिट, विच इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द कार्बन ट्रेड इन द वर्ल्ड, चाइना, विच इज द सिंगल लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कार्बन ट्रेड इन द वर्ल्ड इज दिल्ली मेट्रो. दिस आर द टेक्निकल टॉपिक्स विच आर टू बी डन. ये होते ही द लास्ट टॉपिक क्लाइमेट इंजीनियरिंग. फाइन. So I'll just tell you here, the UNFCCC divides the countries into two groupings. Annex 1 countries and Annex 2 non-Annex 1 countries. What are these Annex 1 countries? Annex 1 countries are all OECD countries. What do you mean by OECD countries? Organization of Economic Cooperation and Development. ये है इसका full form, but in simple words, किसी layman को समझाना है, what are OECD nations? All the developed nations, all the rich nations of the world which have 80% of the world trade. That is the OECD nations. So in the bracket developed nations or rich nations. Plus EIT nations. EIT is economies in transition. Now transition economies, economy subject का अलग है, environment का अलग है. Fine. So as per UNFCCC, economies in transition are those countries which were industrialized prior to or World War II. Prior to 1990s, which were industrialized, especially the countries which were industrialized prior to Second World War. And what are these countries? These are, but today are not developed countries.
but they are not OECD members. And what are these countries? These are the countries, example, CIS nations. CIS, that is the countries which were formed after the disintegration of USSR. CIS, Confederation of Independent States. Example, Kazakhstan, Uzbekistan, Belarusia. Belarusia मतलब बेलारूस, यूक्रेन. ये सारी आज they are not developed nations. They are same like India or even worse than India. In fact, इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, ये जो ब्रिक्स नेशन है, दे आर द इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. बट एज पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन मीन्स द नेशंस विच वर इंडस्ट्रियलाइज्ड. यूएनएफसीसी के हिसाब से प्रायर टू वर्ल्ड वॉर II दे आर Kazakhstan, etc. What happens here? Here the problem is Kyoto Protocol is binding on them, on all the Annex I countries. And these are the developing countries on whom Kyoto Protocol is not binding. Kyoto Protocol is not binding. You will require a big page iske liye and enough space. So what does the Kyoto Protocol says? Kyoto Protocol says that Kyoto Protocol says that the countries should reduce their greenhouse gases. The countries should reduce their greenhouse gases. Countries should reduce their greenhouse gases by average 5.2%, by an average 5.2% by the year 2008 to 2012, from the year 2008 to 2012. From the year 2008 to 2012, ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड. एंड कौन से ग्रीन हाउस गैसेस? It applies to 6 greenhouse gases that are listed in A. Be very careful while reading the notes. अपने ही QEP का मतलब वैल्यू एडेड मटेरियल्स में गलती है, जो क्योंकि बाहर के टेस्ट सीरीज में या बाहर के मटेरियल्स में बहुत कैजुअली यूज करते हैं वर्ड Annex I, Annex A interchangeably. No, it is Annex I is countries, Annex A is greenhouse gases. Fine, listed in Annex A, and they are, so ये है gases under the Kyoto. They are carbon dioxide, ये 6 गैसेस, ये याद रखना. कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, PFC, that is per fluoro
कार्बन, HFC किगाली एग्रीमेंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC किगाली एग्रीमेंट, that is the hydrofluorocarbon, and sulfur hexafluoride, SF6. अब क्या यूपीएससी कर सकती है, इनमें से कुछ गैसेस उठा सकती है और पूछ सकती है whether they are in the Montreal protocol or not. So which of the gases out of this is in the Montreal protocol? Montreal, HFC. Only HFC is in the Montreal protocol. Any of these gases which is there in the Stockholm Convention? Stockholm Convention, persistent organic pollutants पे hexachlorobenzene, then polychlorinated biphenyls, DDT, endosulfan, एल्ड्रीन, डेल्ड्रीन, ये सारे पॉइजन्स है, कोई भी इसमें से नहीं है. सो ये 3 लिस्ट कंपेयर करके जाना है. फाइन. सिमिलरली मैं आपको 3 लिस्ट दूंगा सैटरडे को, उसमें 2 मैंने किया है, उसको बहुत सिंपल करके हम ये करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सफर, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, एक में 8 है. फाइन. एक में 8 प्लस बेंजीन प्लस मर्क्यूरी है, और एक है ग्रेडेड एक्शन प्लान जिसमें सिर्फ 2 है. एंड देन बजट में नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जिसमें भी सिर्फ 2 है. तो ये है कंफ्यूजिंग डेटा, पढ़ाने का कुछ नहीं इसमें. दैट इज यू शुड हैव अ लिस्ट टेबल विच इज मेड कि ये सफर में ये है, उसमें एलईडी डिस्प्ले है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में कलर कोड्स है विच इज फॉर द 8 पोल्यूटेंट्स. ग्रेडेड एक्शन प्लान इज ओनली फॉर दिल्ली एनसीआर जिसमें ओनली पर्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 है. फाइन. एंड नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में भी पर्टिकुलेट मैटर पे ही फोकस है. So this is how the questions can be asked. Fine with this? Now come back to this. So इनके ऊपर it was binding, and obviously it was not binding on the non-Annex 1 countries. Now therefore what happened, USA did not sign, Canada withdrew from the Kyoto Protocol. You should remember the only country that withdrew from the Kyoto Protocol was Canada, and one country that did not ratify is USA. Fine. So अब there are remaining countries, Japan, I'll take Germany, I'll take Russia, I'll take France. So these are the 4 countries जिनको they have to reduce their greenhouse gas emissions by, maybe it will take a hypothetical figure, by 100 units of carbon dioxide. अब saying this is very easy from 2008, though it was signed in 1995. कितना time दिया है देखो. Why the time is given? Because reducing the greenhouse gas emissions means changing the economy. कोल बेस्ड इकोनॉमी, पेट्रोल बेस्ड इकोनॉमी टू न्यूक्लियर एनर्जी या सोलर पावर बेस्ड इकोनॉमी. इतने जल्दी नहीं होगा, एंड इट कम्स विद द कॉस्ट. एंड कॉस्ट के साथ मोर इंपॉर्टेंटली इट कम्स विद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. इट कम्स विद unemployment, not exactly cyclical, it comes with the unemployment which is caused when you shift from one technology to another. What is that? It is frictional unemployment, not seasonal. Seasonal, cyclical is seasonal. Frictional unemployment, that is एक जो हो रही है because you are changing the entire technology and therefore it takes time to regenerate oneself, or it takes time to adapt to the technologies. इंस्टीट्यूशनल नहीं, इंस्टीट्यूशनल अलग है. जो कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट है देख लेना, मैं भूल गया हूं उसका. फाइन. नाउ विद दिस अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, देयरफॉर मेनी कंट्रीज इन दिस आर द डेवलप्ड नेशन, सो इनको एक रास्ता दे दिया था दैट the sum of the countries out of this were divided into the subgroup, and this subgroup was known as Annex 2 nations. Understanding what is Annex 2? It is a subgroup within the Annex 1. And Annex 2 nations were only OECD countries. Only OECD members. And this subgroup
this only OECD members, that is Japan, Russia, etc., which should be reducing their greenhouse gas. Isme Kazakhstan is also there, isme Ukraine is also there. But Annex 2 were only the OECD members. They were given the option of either transferring the money or technology or both to the non-Annex 1 countries, so that there is clean energy project, a new project which comes, and this clean energy project was known as Clean Development Mechanism. CDM. So what is this Clean Development Mechanism? It is nothing but a transfer of technology or money from Annex 1, especially कौन सी Annex 2 to the non-Annex 1 nation is what is known as a Clean Development Mechanism. Understood this? I'll again repeat. Clean Development Mechanism is between Annex 2 and non-Annex 1 nation, is between Annex 2 and non-Annex 1 nation, where the Annex 2 nation either transfers technology, Annex 2 nations either transfers technology or money to a non-Annex 1 countries, to generate certified emission reductions, in non-Annex 1 countries. Certified emission reduction in the non-Annex 1 countries. So suppose this is India and China, developing countries, इसमें India and China है, the second and the third largest polluters, which are industrialized nations today, but not historically industrialized. Have you understood everything till here? थोड़ा ये technical हो जाता है इसलिए. Understood? उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है ट्रांसफर करने के लिए. यही तो है खासियत इसकी. It divides the countries into Annex 1, non-Annex 1. Annex 1 में economies in transition को छोड़ देता है, only rich countries को Annex 2 में डालता है, और सिर्फ Annex 2 को कहता है कि it should help the non-Annex 1 countries. रशिया आएगा इसमें, but कजाकिस्तान नहीं आएगा. Clean Development Mechanism मतलब the country which has benefited most from, ये थोड़ा, can you see, it is more like a चोरी कि आप अपना emissions करते जाओ but help the countries to reduce in the developing nations. But it was opposed by most of the countries, but it was accepted by India and China क्योंकि उनको पता था projects उनके पास ही आएंगे. And India benefited a lot because India, because of this, got metro technology in the form of Delhi Metro from Japan. When did the first commitment period start? 2008 to 2012. When did Delhi Metro arrive proper? 2004. दिल्ली मेट्रो आया 2004 में बिकॉज जापान को उतना कमिटमेंट करना था. 2002 में प्रोजेक्ट शुरू हो गया, N1 के एंड में या 2 में, बट प्रॉपर जो रनिंग हुआ कब हुआ? 2004 में. क्यों हुआ?
एज ई सेड 2001 के एंड में या 2 में, क्योंकि दिल्ली मेट्रो डायरेक्टली आके तो बैठेगी नहीं, देयर हैज टू बी सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, उसके लिए 8 से 10 साल लगेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे चलता रहा लंबा. So we got the technology from Japan. Because of the coming up of Delhi Metro, we got even the CNG technology from Germany. CNG हमारे पास नहीं था. We didn't know how to use the CNG technology. So Delhi got this, and because of the CNG in Delhi Metro, did the emissions or carbon emissions in Delhi reduce that time? Up to it has increased because the number of vehicles have increased, but the carbon emissions reduced. Up this carbon emissions which were reduced were called as certified emission reductions. Don't write anything, I'll give you a proper definition. Is it binding on India? Suppose with the coming up of Delhi Metro or this thing, there has been reduction of certified emission reduction of 300 units of carbon dioxide. India ke upar it is not binding. Now India can sell this 300 units to 100 to Japan, 100 to Germany, 100 to Russia, depending upon कौन ज्यादा पैसा दे रहा है. So this mechanism in which the certified emission reductions were bought and sold is what is known as carbon trade. So carbon trade occurs between non-Annex 1 countries and Annex 2 nations. Fine. And जो पैसे आते थे, that was known as carbon credit. What I said, 300 यूनिट जो ज्यादा पैसे देगा उसको हम बेचेंगे, बिकॉज कार्बन ट्रेड वॉज नॉट रेगुलेटेड बाय वर्ल्ड बैंक, IMF और एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज डन ऑन कमोडिटी एक्सचेंजेस. जितना प्राइस was to be determined by market demand and supply, and therefore Delhi Metro is the single largest project which has earned a lot from the carbon trade. Fine. So ये हो गया regarding this carbon trade, clean development mechanism, carbon credit. Carbon credit is the amount of money that we get. So they used to say, suppose इन तीनों ने buy किया, they have met their commitment period. Fine. अब what about these two countries? ये कहेंगे कि हमारे पास तो ना पैसे है ना टेक्नोलॉजी है, we were once a part of Russia, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है. So इनके लिए there is another mechanism that two Annex 1 nations, any two Annex 1 nations, remember the word Annex 1 में भी Japan and Germany can come together, or Japan Kazakhstan also can come together, will implement a project, and that project is what is known as a joint implementation. What is the difference between clean development mechanism between Annex 1 and non-Annex 1? What is joint implementation? Between two or more Annex 1 nations. और ये इनको परमिशन नहीं है कार्बन ट्रेड की, कार्बन क्रेडिट. If they are implementing a project, they are following their own commitment. They cannot sell. Fine. So in the joint implementation, there is no buying and selling. In the clean development mechanism, there is a concept of buying and selling. So you want a break or should I continue? हाँ, इंडिया कैन सेल इट. इंडिया के लिए इट इज नॉट बाइंडिंग. हाँ, ये उनका लॉस है डबल. एक तो पैसे भी देंगे और बाय भी करेंगे. दैट इज व्हाई द क्योटो टू डिड नॉट टेक प्लेस. ये क्या कर रहे हैं? दे आर सेइंग कि चलो हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और मनी दे रहे हैं, उसके बाद हम आपसे खरीद भी रहे हैं. सो फायदा इसमें किसका हो रहा है? इंडिया चाइना का. हाँ, कौन सा? यस. क्या Annex 2 क्या है? जो रिच नेशंस है, विल टेक 15 मिनट्स ब्रेक. 5:35 I'll be in the class. I'll require only 1 hour after that. So 20 minutes, let me take a break also.